It's recording. Hmm. हेलो गाइस। आज हम Hello. पढ़ने वाले हैं व्लादिमीर नाबोकोव की द गिफ्ट। तो हम ये पढ़ रहे हैं कुछ टाइम से। मैं तो उसके 174 पेज पे हूँ पर्सनली, बट हम स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सारी स्ट्रीम्स देखो, क्योंकि वी विल ऑलवेज गिव यू कंटेक्स्ट कि क्या चल रहा है लाइफ में। और तो अभी हम 174 से ही पढ़ेंगे। अभी तक क्या हुआ है मैं उसका कंटेक्स्ट दे देती हूँ ताकि वी कैन enjoy reading the next few pages. तो ये बुक बेसिकली हमें इसका प्रोटैगनिस्ट है एक बंदा, उसका नाम है फ्योडोर, और वो रह रहा है बर्लिन में, बट वो है रशियन। 1920s की बात है ये। और वो राइटर है, और उसने एक पोएम्स की बुक ऑलरेडी पब्लिश कर दी है, बट ज़्यादा लोगों ने ख़रीदी नहीं है। और वो अभी एक जगह रेंट पे रह रहा है कहीं पे तो। और जो अभी एकदम करंट हम पढ़ रहे हैं उसमें वो एक बंदी का वेट कर रहा होता है। और उस बंदी का भी आई थिंक थोड़ा सा कंटेक्स्ट हम दे सकते हैं। क्या नाम है बंदी का? जीना है आई थिंक। जीना ने इसकी बुक खरीदी थी मेरे हिसाब से। अच्छा, जीना, हाँ सॉरी। दो चीज़ें हैं जीना के बारे में। एक तो जीना जो है वो उसके जो हाउस ओनर है जिसके घर में वो रहता है उसकी बेटी है। और जीना ने उसकी बुक भी खरीदी थी, मतलब उसने बाद में जाके देखा कि किस किस लोगों ने मेरी बुक खरीदी थी, तो जीना, बहुत ही कम लोगों ने खरीदी थी बेसिकली, तो जीना ने भी खरीदी थी। बट अभी तक उसका ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है स्टोरी में। और इन जनरल इसमें ज़्यादा प्लॉट नहीं है बुक में, तो इट्स नॉट लाइक यू आर मिसिंग अ लॉट। अभी तक ऐसा कुछ प्लॉट ही नहीं हुआ है। बस वो है, जी रहा है वो अपनी ज़िंदगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसको थोड़ा सा और लेके पढ़ेंगे ताकि थोड़ा मज़ा आए। तो वो जीना की वेट कर रहा है, और ये पहली बार ये दोनों इसमें मिलते हुए दिखाए हैं, मतलब पूरी बुक में पहले तो नहीं दिखाई है ये चीज़। तो आई विल रीड, ठीक है? करूँ? Hmm. Yes. Ready. वेटिंग फॉर हर अराइवल। तो फ्योडोर इज वेटिंग फॉर जीना's arrival. She was always late, and always came by another road than he. Thus it transpired that even Berlin could be mysterious. Within the linden's bloom, the streetlight winks. A dark and honeyed hush envelops us. Across the curb, one's passing shadow slinks. Across a stump, a sable ripples thus. The night sky melts to peach beyond that gate. There water gleams, there Venice vaguely shows. Look at that street, it runs to China straight, and yonder star above the Volga glows. Oh, swear to me to put in dreams your trust, and to believe in fantasy alone, and never let your soul in prison rust, nor stretch your arm and say, a wall of stone. तो ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था पैराग्राफ। तो लास्ट टाइम की स्ट्रीम आप देख सकते हो अगर आपका इसको थोड़ा डिटेल डिस्कशंस चाहिए। बट लास्ट टाइम हमारी इस बात पे बहस हुई थी कि इसका मतलब क्या है। तो मैंने बोला था कि इसका कुछ मतलब नहीं है, ऐसा लग रहा है कि उसको जीना से प्यार हो गया है, विच वॉज राइट। She always unexpectedly appeared out of the darkness, like a shadow leaving its kindred element. At first, her ankles would catch the light. She moved them close together as if she walked along a slender rope. Her summer dress was short, of night's own color, the color of the streetlights and the shadows, of tree trunks and of shining pavement, paler than her bare arms and darker than her face. This kind of blank verse block dedicated to Georgy Chilkov, ये random writers की बात हो रही है. Fyodor kissed her on her soft lips. She leaned her head for a moment on his collarbone, and then quickly freeing herself, walked beside him. At first, with such sorrow on her face, as if during their 20 hours of separation an unheard of disaster had taken place. But then, little by little, she came to herself and now smiled. Smiled as she never did during the day. What was it about her that fascinated him most of all? Her perfect understanding, the absolute pitch of her instinct for everything that he himself loved.
In talking to her, one could get along without any bridges, and he would barely have time to notice some amusing feature of the night before she would point it out. And not only was Zena cleverly and elegantly made to measure for him by a very painstaking fate, but both of them, forming a single shadow, were made to the measure of something not quite comprehensible, but wonderful and benevolent and continuously surrounding them. तो ये भी हमने लास्ट टाइम यहाँ पे हमने ख़त्म किया था. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस पैराग्राफ, हम दोनों को ये काफ़ी पसंद आया था. um, मुझे तो ये वाला पार्ट पसंद आया था जिसमें वो बहुत सैड हो जाती है उससे मिलके कि एज इफ एन अनहर्ड ऑफ डिजास्टर हैड टेकन प्लेस इनिशियली, और फिर वो स्माइल करती है, और तुम्हें आई थिंक वो बहुत पसंद आया था कि ही वुड He बेयरली doesn't. हैव. Hmm. हाँ. Until नोटिस. she says she notices it, he doesn't notice the हाँ. surroundings. सराउंडिंग्स ठीक है. तो आगे चलते हैं, हम मूड में आ चुके हैं थोड़ा उनके लव वाले. Hmm. When he had first moved in with the Shiojulevs and actually sorry, ये मतलब काफी ये वाला वर्ड मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड पार्ट्स ऑफ द बुक कि आई वाज एक्चुअली वेटिंग कि हम नेक्स्ट स्ट्रीम कब करेंगे तो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. Hmm. Cute. When, क्यों मतलब एक उसमें वो है, एक सस्पेंस सा है क्योंकि कि अब उससे मिला है वो क्या होगा, मतलब Hmm. Got वाला है it. क्या. When he had first moved in with the Shiojulevs, Shiojulev उसका लैंडलॉर्ड है जिसकी जीना बेटी है. तो when he had first moved in with the Shiojulevs and seen her for the first time, he had had the feeling that he already knew a great deal about her, that even her name had been long familiar to him, and certain characteristics of her life. But until he spoke to her, he was unable to make out whence and how he knew it. At first, he saw her only at dinner, and he watched her carefully, studying her every movement. She hardly spoke to him, although by certain signs, not so much by the pupils of her eyes as by their luster that seemed slanted at him. He felt that she was noticing every glance of his, and that all her movements were restricted by the lightest shrouds of that very impression she was producing on him, and that all her movements were restricted by the lightest shrouds of that very impression she was producing on him. And because it seemed completely impossible to him that he should have any part in her life, he suffered when he detected something particularly enchanting in her, and was glad and relieved when he glimpsed some flaw in her beauty. So, yeah. Her pale hair, which radiantly and imperceptibly merged into the sunny air around her head, the light blue vein on her temple, another on her long, tender neck, her delicate hand, her sharp elbow, the narrowness of her hips, the weakness of her shoulders, and the peculiar forward slant of her graceful body, as if the floor over which, gathering speed like a skater, she hastened, was always gently sloping away towards the haven of the chair or table on which lay the object she sought. All this was perceived by him with agonizing distinctness, and then, during the day, was repeated an infinity of times in his memory, returning ever more lazily, pallidly, and jerkily, losing life and dwindling as a result of the automatic repetitions of the disintegrating image to a mere sketch, broken and blurred, in which nothing of the original life subsisted. But as soon as he saw her again, all this subconscious work directed at the destruction of her image, whose power he feared more and more, went by the board, and beauty again flared forth, her nearness, her frightening accessibility to his gaze, her frightening accessibility to his gaze, the reconstituted union of all the details. If during those days he had had to answer before some pretersensuous court, अच्छा इसका मीनिंग देखना पड़ेगा, मुझे तो नहीं पता इसका मीनिंग. If during those days he had to answer before some pretersensuous court, he would scarcely have decided to say that he loved her.
for he had long since realized that he was incapable of giving his entire soul to anyone or anything. Its working capital was too necessary to him for his own private affairs. But on the other hand, when he looked at her, he immediately reached, in order to fall off again a minute later, such heights of tenderness, passion, and pity as are reached by few loves. And at night, especially after long periods of mental work, half coming out of sleep, not by the way of reason as it were, and at night, especially after long periods of mental work, half coming out of sleep, not by the way of reason as it were, but through the back door of delirium, with a mad, long drawn out rapture, he felt her presence in the room on a camp bed hastily and carelessly prepared by a property man 2 paces away from him. But while he nursed his excitement and revelled in the temptation, in the shortness of the distance, in the heavenly possibilities, which incidentally had nothing of the flesh, he was enticed back into the oblivion of sleep, whence he hopelessly retreated, thinking he still continued to hold his prize. Actually, she never appeared in his dreams, remaining content to delegate various representatives of hers and confidantes who bore no resemblance to her, but who produced sensations that made a fool of him, to which the bluish dawn was a witness. Yes. कुछ कहना है तुम्हारे बारे में? बड़ा रोमांटिक है बंदा। बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। हम्म। क्योंकि मुझे इसमें ये मतलब जो मुझे कुछ ये पूरा पैराग्राफ ही इतना बढ़िया लिखा है इसने तो। हम्म। बट जैसे स्टार्टिंग में ये बोलता है कि उसको जब दिखता था अच्छा तो वो सफ़र करता था क्योंकि उसे लगता था कि वो तो कभी उसकी हो ही नहीं सकती। ही सफर्ड व्हेन ही डिटेक्टेड समथिंग particularly enchanting in her and was glad and relieved when he glimpsed some flaw in her beauty। कि हम्म। मुझे वो काफ़ी सही लगा। हम्म। और फिर उसकी इमेज रिपीट करते रहना मतलब आई थिंक रिलेटेबिलिटी तो है। तुम्हें लगी रिलेटेबिलिटी उसके प्यार में या तुम्हें लगा कि कुछ ज़्यादा कोर्स ही नहीं। हो? ये अब यार। हुँ, एंड में जो ड्रीम्स के बारे में बोल रहा है दैट शी डजंट कम इन हर ड्रीम इन हिज ड्रीम्स। हुँ, ये एग्जैक्टली समझ नहीं आया पर अच्छा लगा। आई थिंक आई कैन रिलेट पर आई कांट आर्टिकुलेट व्हाई दैट इज। नहीं ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा कि वो खुद कभी नहीं आती थी और हम्म। वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ हर्स को बोलती थी मतलब आने को। अच्छा वो ओके। रिप्रेजेंटेटिव क्या इसमें लिखा है कि हु बोर नो रिजेम्बलेंस टू हर बट हु प्रोड्यूसेस सेंसेशंस दैट मेड अ फूल ऑफ हिम टू व्हिच द ब्लूइश डॉन वाज अ विटनेस। आई थिंक वो ही यूज्ड टू हैव वेट ड्रीम्स मतलब ऐसा हम्म। ये कहना हम्म। चाह रहा है। हम्म। हम्म। बट ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका लगा पुट करने का एंड आई थिंक वही एग्जैक्टली आई कैन नॉट पिन पॉइंट कि मैं इससे डायरेक्टली रिलेट कर पा रही हूँ बट सही लग रहा है कि हाँ वो खुद नहीं आती थी और बट कुछ ऐसा आता था कुछ जो उसके अंदर वही फीलिंग इवोक कर देता था। हम्म। ये वाला भी अच्छा लगा मेरे को वो कि फ्रांसिस स्लीप से बाहर आके जब उसको लगता था कि उसकी इतना उसकी करीब है। प्रेजेंस में। हम्म। ठीक है आगे चलें फिर। हम्म। ये एंड भी देन एक मिनट। बोलो। देयर इज a sentence कि he feared that his glances she is aware of his glances ऐसा कुछ लिखा था ना तुमने रीड हुँ, किया तो एक बार हुँ। पढ़ लो। She hardly spoke to him, although by certain signs, not so much by the pupils of her eyes as by their lustre that seemed slanted at him, he felt that she was noticing every glance of his, and that all her movements were restricted by the lightest shrouds of that very impression she was producing on him. मतलब he is feeling that he might be restricting her behavior because he is looking at her। हाँ, मतलब हम्म। क्योंकि वो उसको नोटिस कर रही है, तो इसीलिए वो
एक इम्प्रेशन प्रोड्यूस करने टाइप ही मूवमेंट कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि वो हम्म उसको नोटिस कर रहा है, हम्म विच इज ऑल्सो वेरी ट्रू। हम्म वो बहुत ही बढ़िया है, चलो देखते हैं क्या होता है आगे। हम्म एंड देन and then, waking completely to the sounds of the morning, he immediately landed in the very thick of the happiness sucking at his heart, and it was good to be alive. And there glimmered in the mist some exquisite event which was just about to happen. But on trying to imagine Zena, all he saw was a faint sketch, which her voice behind the wall was incapable of igniting with life. तो उसकी वॉल के पीछे आई थिंक बाथरूम की वॉल है, तो वहां से आवाज आती है लोगों की, बट विच हर घर वॉइस में। बिहाइंड, घर में, उन जिस घर उनके घर में रहता हम्म, है। हाँ। But on trying to imagine Zena, all he saw was a faint sketch which her voice behind the wall was incapable of igniting with life. And an hour or two later, he met her at table, and everything was renewed, and he again understood that without her there would not be any morning mist of happiness. One evening, a fortnight after he had moved in, she knocked on his door and, with a haughtily resolute step and an almost contemptuous expression on her face, entered, holding in her hand a small volume hidden in a pink cover. I have a request, she said briskly and curtly. Will you sign this for me? Fyodor took the book and recognized in it a pleasantly worn, pleasantly softened up by 2 years of use copy of his collection of poems. Acha, uski collection of poems. He began very slowly to unstopper his bottle of ink. Although at other times when he wanted to write, the cork would pop out as that in a bottle of champagne. Meanwhile, Zena, watching his fingers fumbling the cork, added hastily, only your name, please. Only your name. Fyodor Godunov Chedinich uska pura naam, signed his name and was about to put the date, but thought better of it, fearing she might detect in this some vulgar emphasis. That's fine, thank you, she said, and went out, blowing on the page. ये मुझे तो बहुत ही सही लगा कि वो डेट डालने वाला था, बट उसने फिर नहीं डाली क्योंकि उसने ओनली और नेम बोला है, क्योंकि वो कुछ ये ना गलत ना सोच ले, फियरिंग शी माइट डिटेक्ट इन दिस सम वल्गर एम्फेसिस। ऐसा होता है ना कि तुम छोटी सी भी कोई चीज करो, तुम्हें लगता है सामने वाला कुछ गलत मतलब ना निकाल ले। वो है। पर एक चीज समझ नहीं आया। हम्म। डज शी नो कि ही इज द पर्सन हु रोट दैट बुक, या शी नोस। शी नोज? ओके। सही था। The next day, but one was Sunday, and around 4 it suddenly became clear that she was alone at home. He was reading in his room, she was in the dining room, and kept making short expeditions from time to time into her own room across the hall, whistling as she went, and in her light, crisp footfalls there was a topographical enigma, since a door from the dining room led straight into her room. अच्छा, मतलब वो अब डाइनिंग रूम में बैठी थी और वो डाइनिंग रूम से हॉल में से होके अपने रूम में जा रही थी, जबकि डाइनिंग रूम से डायरेक्टली डोर उसके रूम में जाता है। राइट। ठीक है। वेट कर रही है वो। Yes. मेक ए मूव, इडियट। But we are reading and we will keep on reading. ये अच्छा ऑफ ही कोर्स। अपने होता मेटा है ये तो। है। Longer, longer, and for as long as possible shall I be in a strange country, and although my thoughts, my name, my works will belong to Russia, I myself, my mortal organism, will be removed from it. And at the, I think ये quotes में है, तो I think this is something that he is reading. And at the same time, on his walks in Switzerland, the man who could write thus used to strike dead with his cane the lizards running across his path. The devil's brood, as he said, with the squeamishness of a Ukrainian and the hatred of a fanatic. I think this is a comment on जिस बंदे ने ये लिखा है जो वो पढ़ रहा है।
An unimaginable return, the regime. What do I care? Under a monarchy, flags and drums. Under a republic, flags and elections. Again she went by. No reading was out. Too excited, too full of the feeling that another in his place would have sauntered out and addressed her with casual savoir faire something severe fare. But when he imagined himself sailing out and butting into the dining room and not knowing what to say, he began to wish that she would soon go out or that the Shojolevs would come home. And at the very moment when he decided to stop listening and give his undivided attention to Gogol, Fyodor quickly got up and went into the dining room. Yes. So go on. Okay. She was, yes. Let's see. She was sitting by the door to the balcony and with her gleaming lips half parted was aiming a thread at a needle. Through the open door, one could see the little sterile balcony and hear the tinny ringing and clicking of leaping raindrops. It was a heavy, warm April shower. Sorry, I didn't know you were here, said mendacious Fyodor. I only wanted to say something about that book of mine. It's not the real thing. The poems are bad. I mean, they're not all bad, but generally speaking, those I've been publishing these last 2 years in the Gazeta are much better. I liked very much the one you recited at the evening of poetry, she said. The one about the swallow that cried out. Oh, you were there? Yes, but I have even better ones, I assure you. She suddenly jumped up from her chair. Threw her, she suddenly jumped up from her chair, threw her down. Okay, this is Bablu. Let's say it for Bablu. ठीक है. She suddenly jumped up from her chair, threw her darning on the seat, and with her arms dangling, leaned forward. Taking quickly small gliding steps, she sped into her room and returned with some newspaper clippings. His and Konchev's poems. एक सेकेंड वो अपनी चेयर से उठी और अपना जो भी कर रही थी उसने फेंक दिया नीचे और रूम में जाके न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ले आई उसकी और वो जो कॉन्शियव जो एक और बंदा है जिसको राइवल समझता है वो अपना राइटर उसकी पोएम्स लेके आई। जिसको ये क्लासेस देता है वो। नहीं नहीं वो अलग है कॉन्शियव जो एक क्लासेस देने वाले बंदा जिसके बारे में बात कर रहा था और हम कंफ्यूज हो गए थे कि ये पॉलिटिक्स की बात। हाँ, राइट, हम्म। राइट। तो ये हुँ, उसका राइवल जो वो भी राइटर ही है तो मतलब राइवल इन द सेंस थ्योडोर उसको राइवल मानता है ऐसे राइवल हुँ। तो क्या ही है और बट he thinks कि there are better poems that I read than the one you have read that day। मतलब वो उस गैदरिंग में इसने कुछ पोएम पढ़ के सुनाया लोगों हम्म को। He was there in हम्म that gathering and she said, "I had read better poems" and she is now bringing those उसका राइवल का न्यूज़पेपर्स टू शो हिम नहीं apparently। नहीं 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 उसने बोला कि मैं तुमने जो रिसाइटिंग में जो तुमने पोएम पढ़ी थी वो बहुत अच्छी थी तो इसने बोला कि ओ वर यू देयर यस बट आई हैव इवन बेटर वंस आई अश्योर यू ऐसा कह रही है कि तुम वहां पे थी क्या बट उससे भी बेटर पोएम्स हैं मेरे पास मतलब अगर वो अच्छा तो अच्छी इसने बोला। हाँ ओके, इसने फ्योडर बोला ने बोला मेरे पास और 4 माल है। बस फिर ये दिन है और ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग लाने गई है पता नहीं क्यों ठीक है क्लिपिंग ले आई है तो ये बोल रही है बट आई डोंट थिंक आई हैव एवरीथिंग हियर शी रिमार्क्ड I didn't know that such things happened, said Fyodor, and added awkwardly, now I'll ask them to make little holes around them with a perforator, like coupons, so that you can tear them out more easily. She continued to busy herself with a stocking stretched over a wooden mushroom. आई थिंक वो क्योंचेव का जो रेफरेंस है वो यूजलेस ही है उसके बारे में कुछ बात तो नहीं कर रही है वो बस न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स लाई है और वो कह रहा है कि न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को कलेक्ट करने का इजियर तरीका होना चाहिए तो हुँ। क्यों उन्होंने करा पता नहीं शी वो कंटिन्यूड टू लाइन एक बार फिर से पढ़ना कौन से को जहाँ मेंशन किया है? व्हाई? शी सडनली जब वो बोलता है कि बट आई हैव इवन बेटर वंस आई अश्योर यू उसके बाद है हुँ, शी suddenly jumped up from her chair threw her darning on the seat and with her arms dangling leaned forward taking quickly small gliding steps she sped into her room and returned with some newspaper clippings his and Konchiev's poems. अच्छा, ओके। Hmm.
हुँ, ठीक है, उसने बोला कि ठीक है कूपन की तरह होना चाहिए। उसके बाद शी कंटिन्यूड टू बिजी herself with a stocking stretched over a wooden mushroom and without lifting her eyes but smiling quickly and slyly she said, I also know that you used to live at 7 Tannenberg Street. I often went there. You did? Said Fyodor, amazed. I used to know Lawrence's wife in St. Petersburg. She gave me drawing lessons. How queer, said Fyodor. Romanov is now in Munich, she continued, a most objectionable character, but I always liked his things. They talked about Romanov and his pictures. He had reached full maturity. Museums were buying his stuff. Having passed through everything, loaded with rich experience, he had returned to an expressive harmony of line. You know his footballer? There's a reproduction in this magazine. Here it is. The pale, sweaty, tensely distorted face of a player depicted from top to toe, preparing at full speed to shoot with terrible force at the goal. Tousled red hair, a burst of mud on his temple, the taut muscles of his bare neck, a wrinkled, soaking wet violet singlet clinging in spots to his body, comes down low over his spattered shorts and is crossed with the wonderful diagonal of a mighty crease. He is in the act of hooking the ball sideways. One raised hand with wide splayed fingers is a participant in the general tension and surge. But most important, of course, are the legs. A glistening white thigh, an enormous scarred knee, boots swollen with dark mud, thick and shapeless, but nevertheless marked by an extraordinarily precise and powerful grace. The stocking has slipped down, one vigorously twisted calf, one foot is buried in rich mud, the other is about to kick, and how? The hideous tar black ball, and all this against a dark grey background saturated with rain and snow. Looking at this picture, one could already hear the whiz of the leather missile, already see the goalkeeper's desperate dive. ये मेरे को बहुत अच्छी बात लग गई कि ये कुछ भी रैंडम चीज़ की बात भी करने लगते हैं तो उसको इतनी बुरी तरह डिस्क्राइब करते हैं कि वही मेन चीज़ है इस पूरी बुक की ऐसे। हुँ। ठीक है। ये अ, एक मैं बीच में ज़ोन आउट हो गया था। ये हुँ। एक फ़ोटो देख रहा है, उसमें क्या हो रहा है डिस्क्राइब कर रहा है। हाँ, कोई तो एक बंदा है रोमानॉव जो जिसको ये दोनों जानते हैं और हुँ, वो अब काफ़ी मतलब फ़ेमस हो गया है, उसकी म्यूज़ियम्स वग़ैरह में पेंटिंग। फ़ोटोज़ लगती हैं पेंटिंग, तो हुँ, उसकी एक पेंटिंग की बात कर रहे हैं। उसने बोला है कि देयर इज़ अ रिप्रोडक्शन इन दिस मैगज़ीन, मैगज़ीन में वो दिखा रही है कि देखो ये वाली पेंटिंग। हुँ, हुँ, And I know something else, said Zena. You were supposed to help me with the translation. Charsky told you about it, but for some reason you didn't turn up. How queer. कैसा सा है यार ये कुछ बोल ही नहीं पा रहा. Repeated Fyodor. There was बहुत relate कर रहे होगे इससे तो तुम. ऑफ़ The two. कोर्स, फेलो इंट्रोवर्ट। There was a bang in the hall. एवोल्यूशनरी। क्या? दुनिया को बदलना है इसको, पर लड़की से बात करने से डरता है। मतलब हम्म, यही है कांट फाइंड एग्जैक्टली द तुम राइट ही वर्ड्स। हो ये तो. हुँ, एग्जैक्टली तुम ही हो ये तो. हुँ, हुँ, हम्म. There was a bang in the hall. That was Mariana Nikolovna, उसकी मम्मी. I think stepmom. I am not sure, but बंदी की मम्मी. That was Mariana Nikolavna returning, and Zina deliberately got up, gathered the cuttings together, and went to her room. Only later did Fyodor understand why she considered it necessary to act that way. But at the moment, it seemed to him like discourtesy. And when Mrs. Shiojolev came into the dining room, the result was as if he had been stealing sugar out of the sideboard. One evening, a few days later, he overheard an angry conversation from his room, the gist of which was that guests were due to arrive and that it was time for Zena to go downstairs with the key. He heard her go, and after a brief inner struggle, he thought himself up a walk, say to the slot machine by the public garden for a postage stamp. ये कितनी अच्छी लाइन है. He heard her go, and after a brief inner struggle, he thought himself up a walk. निकले उसमें कि हुँ, चलो हुँ, मैं भी वॉक पे चलता हूँ. Say to the हुँ, slot machine by the public garden for a postage stamp.
To complete the illusion, he put on a hat, although he practically never wore one. The minute light went out while he was on his way down, but immediately there was a the minute light went out while he was on his way down, but immediately there was a click and it went on again. That was she downstairs who had pressed the button. He found her standing by the glass door, playing with the key looped on her finger. The whole of her brightly illuminated. Everything glistened. The turquoise knit of her jumper, her fingernails, and even little hairs on her forearm. It's unlocked, she said. But he stopped, and both of them began to look through the glass at the dark, mobile night, at the gas lamp, at the shadow of the railings. It doesn't look like they are coming, she muttered, softly clinking the keys. Have you been waiting long? He asked. If you like, I'll take a turn. And at that moment, the light went out. If you like, I'll stay here all night, he added in the darkness. She laughed and then sighed abruptly, as if fed up with waiting. Through the glass, the ashen light from the street fell on both of them, and the shadow. अच्छा मेरे को एग्जैक्टली ये सेटिंग नहीं समझ आ रही है क्योंकि आई थिंक हमारे घरों में ऐसा नहीं होता है बट किसी तो ग्लास डोर के पास ये दोनों वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा बट आई डोंट गेट कि जो आएगा वो घंटी क्यों नहीं बजा सकता है इनको वहां पे वेट क्यों करना है बट लेट्स जस्ट तुम्हें समझ आ रहा है क्या वेट क्यों करना पड़ रहा है आई थिंक रिसीव करने के लिए इट्स अ थिंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी मे बी हर मदर अच्छा हैज सेंट हर डाउन नो टू हम्म वेलकम अच्छा हाँ हो सकता एंड है इफ दे आर देयर इन देयर ओन वर्ल्ड एंड जस्ट रैंडमली ओ हाय बोल रहे हैं तो बुरा मान जाएंगे हम्म शायद सही हाँ यही लग रहा है ठीक है तो ये लोग वेट कर रहे हैं She laughed and then sighed abruptly, as if fed up with waiting. Through the glass, the ashen light from the street fell on both of them, and the shadow of the iron design on the door undulated over her and continued obliquely over him, like a shoulder belt, while a prismatic rainbow lay on the wall. And as often happened with him, though it was deeper this time than ever before, Fyodor suddenly felt in this glassy darkness the strangeness of life, the strangeness of its magic, as if a corner of it had been turned back for an instant and he had glimpsed its unusual lining. Close to his face, there was her soft, sinuous cheek. Close to his face, there was her soft, sinuous cheek cut across by a shadow. And when Zena suddenly, with mysterious bewilderment and a mercurial sparkle in her eyes, turned towards him, and the shadow lay across her lips, oddly changing her, he took advantage of the absolute freedom in this world of shadows to take her by her ghostly elbows. But she slipped out of the pattern, and with a quick jab of her finger, restored the light. Why? He asked. I'll explain some other time, replied Zena, not taking her eyes off him. Tomorrow, said Fyodor. All right, tomorrow. Only I want to warn you that there is not going to be any conversation between you and me at home. That's final and for good. Then let's. He began. मिनट एक मिनट लास्ट 3-4 लाइन्स फिर से पढ़ना जब वो उसको Hmm. सडनली वो ट्रिगर हो जाता है ये क्या देख रहा हूँ या क्या है लाइफ इस टाइप का होता है उसके Hmm. लिप्स को देखता है चीक को देखता है फिर लिप्स को देखता है उसके बाद क्या है आई हैव लॉस्ट इन दैट ब्यूटी Hmm. बट हमने वो ब्रेक ही ले लिया है तो ये भी मतलब दिस कितना बढ़िया से एकदम से माहौल चेंज कर देता है यार वो जब इसने ये बोला कि ब्रीफ इन स्ट्रगल ही थॉट हिमसेल्फ अप अ वॉक आई थिंक बहुत छोटी छोटी चीजें करता है जिससे कि जैसे उसने लाइट वेंट आउट वगैरह बोला बट आई थिंक ये थोड़ा पोएटिकली लिखता है तो इट पुल्स यू इन कि जैसे जब लाइट वेंट आउट उसने बोला तो मुझे इतना ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ बट व्हेन ही सेड कि the whole of her brightly illuminated, everything glistened. The turquoise bit of her jumper, her fingernails, and even little hairs on her forearm. वो इतनी छोटी सी चीज होती है कि एकदम से आप पुल इन हो जाते हो और वो लाइट फिर और ये वाली चीज तो इसने तो पूरा ही माहौल बना दिया जब इसने ये लिखा कि through the glass the ashen light from the street fell on both of them and the shadow of the iron design on the door undulated over her and continued obliquely
Hmm. मुझे तो इससे वो इमेजिन हुआ कि जैसे जब खिड़की अंधेरा होता है पर बाहर की स्ट्रीट लाइट में से कुछ आ रहा होता है और वो ऐसे लाइट जो है ऐसे ऐसे पास होती है, राइट। हाँ, ऐसा याद हाँ। है तुम्हें? तो यस, वो यस। वाली इमेज एकदम बनी, उससे एकदम से यू कैन इमेजिन देम स्टैंडिंग और अंधेरा हो रहा है और बाहर से रोशनी आ रही है। एंड इट फील्स लाइक वो जो ही इज टेकिंग प्लेजर इन द फैक्ट दैट दैट सेम लाइट इज गोइंग थ्रू बोथ ऑफ देम, ऐसा लगा मुझे। यस। Probably. हाँ, राइट। और ये तो बहुत अच्छा लिखा ही है इसने, जब स्ट्रेंजनेस ऑफ लाइफ, स्ट्रेंजनेस ऑफ इट्स मैजिक, एज इफ अ कॉर्नर ऑफ इट हैड बीन टर्न्ड बैक फॉर एन इंस्टेंट एंड ही हैड glimpsed इट्स अनयूजुअल लाइनिंग। मतलब कितनी अलग अलग सी इमेजेस बनाता है ना वो मन में, कैसे Hmm. लाइफ का कॉर्नर टर्न हो गया है। Hmm. ठीक है, तो बैक टू ये। हाँ, इसके बाद क्लोज टू हिज फेस देयर वॉज हर सॉफ्ट सिनरस चीक cut across by a shadow. And when Zena suddenly, with mysterious bewilderment and a mercurial sparkle in her eyes, turned toward him, and the shadow lay across her lips, oddly changing her, he took advantage of the absolute freedom in this world of shadows to take her by her ghostly elbows. But she slipped out of the pattern, and with a quick jab of her finger restored the light. Why? He asked. I'll explain it some other time, replied Zena, not taking her eyes off him. Tomorrow, said Fyodor. All right, tomorrow. Only I want to warn you that there is not going to be any conversation between you and me at home. That's final and for good. Then he began. But at this point, stocky Colonel Kastkin and his tall, faded wife loomed on the other side of the door. अच्छा, आ गए ये लोग. A very good evening to you, my pretty, said the colonel, cleaving the night at a single stroke. Fyodor went out into the street. The next day, he contrived to catch her on the corner as she returned from work. They arranged to meet after supper by a bench which he had spied out the night before. Well, why? He asked when they had sat down. For 5 reasons, she said. In the first place, because I am not a German girl. In the second place, because only last Wednesday I broke up with my fiance. In the third place, because it would be, well, pointless. In the fourth place, because you don't know me at all. And in the fifth place, she fell silent, and Fyodor cautiously kissed her burning, melting, sorrowing lips. That's why, she said, her fingers running over his and strongly compressing them. Thenceforth, they met every evening. Mariana Nikolaevna, Bandi ki mummy, who never dared to ask her about anything, guessed that her daughter was meeting someone, the more so since she knew of the mysterious fiance. He was a strange, sickly, unbalanced person. That at least is how Fyodor imagined him from Zena's description, and of course, those described people are usually endowed with one basic characteristic: they never smile. He was a strange, sickly, unbalanced person whom she had met when she was 16, 3 years before, he being 12 years older than she. And in this seniority, there was also something dark, unpleasant, and embittered. Then again, according to her account, their meetings had taken place without any sentiments of love being expressed, and because she never made reference to even a single kiss. The impression was given that this had been simply an endless succession of tedious conversations. She resolutely refused to reveal his name or even his type of work, although she gave him to understand that he had been, in a sense, a man of genius. And Fyodor was secretly grateful to her for this, realizing that a ghost with neither name nor environment would fade out more easily. But nevertheless, he experienced pangs of disgusting jealousy, which he strove not to probe. But this jealousy was always present just around the corner, and the thought that somewhere, someone, for all he knew, he might meet the anxious, mournful eyes of this gentleman caused everything around him to assume nocturnal, and the thought that somewhere, some when likha hua hai isme, I have never read that word before.
He thought that somewhere, somewhen, for all he knew, he might meet the anxious, mournful eyes of this gentleman, caused everything around him to assume nocturnal habits of life, like nature during an eclipse. Zena swore that she had never loved him, that from lack of willpower she had been dragging out a tired romance with him and would have continued to do so had it not been for Fyodor coming along. But he was unable to discern any particular lack of willpower in her. अच्छा उसने बोला कि दैट फ्रॉम लैक ऑफ विल पावर शी हैड बीन ड्रैगिंग आउट बट उसने बोला ही वॉज अनेबल टू डिसर्न एनी पर्टिकुलर लैक ऑफ विल पावर तो नहीं है उसमें. Rather, he noticed a mixture of feminine shyness and unfeminine resoluteness in everything. Despite the complexity of her mind, a most convincing simplicity was natural to her, so that she could permit herself much that others would be unable to get away with, and the very speed of their coming together seemed to Fyodor completely natural in the sharp light of her directness. So, hmm. अ, मुझे समझ नहीं आया। शी ब्रोक अप विथ हर फियांसे, नो? हाँ, ब्रोकअप कैसे हुआ ये तो नहीं बताया इन्होंने, पर ब्रोकअप ब्रेकअप. वो 5 रीज़न्स क्या दे रही थी? अ, उससे पहले थोड़ा ठीक से नहीं सुना। फ्योडोर को जो 5 रीजंस दे रही थी. हाँ, क्यों दे रही हाँ, थी? कि वो उसने बोला ना कि फ्योडोर वाई वाला क्वेश्चन जो उसने रात में पूछा था जब उसने किस नहीं करने दिया, हुँ, तब हुँ। ये वाई वाला क्वेश्चन उसने फिर से पूछा जब वो बेंच पे हुँ, मिले थे. तो उसने हुँ, बोला फॉर 5 रीजंस. इन द फर्स्ट प्लेस मैं जर्मन नहीं हूँ. सेकंड प्लेस ओनली लास्ट वेंसडे आई ब्रोक अप विद माय फियांसे. हुँ, थर्ड प्लेस इट वुड बी पॉइंटलेस. फोर्थ प्लेस यू डोंट नो मी एट ऑल. एंड इन फिफ्थ प्लेस and she fell silent and Fyodor हुँ, cautiously kissed her burning melting soul. कितना ये बहुत अच्छा लगा मुझे. तो Fyodor का क्या cautiously kissed her burning melting sorrowing lips. हुँ, वाह. ठीक है. ये भी तुम्हें भी ये बहुत अच्छा लगा कि जो डिस्क्रिप्शन में लोग होते हैं वो कभी स्माइल नहीं करते हैं. हुँ। हम्म. एटलीस्ट हम इमेजिन नहीं करते हाँ, उन्हें स्माइल करते हुए। हम्म. Yes. ठीक है, फिर हम बाद में कंटिन्यू करेंगे ना. अभी इतना ही काफी है ना आज के लिए. हुँ। वर्ड ये मीनिंग. एक्चुअल चीज़ जो समझ में आई मुझे, व्हाई इज़ ही जेलस? शी ब्रोक अप विथ हिम, नो? बट होगा उसको कि कभी मतलब कुछ छोड़ वो के चली बंदा. जाएगी, हाँ, आई एम छोड़ जस्ट अ के. रिकॉल। क्या हो सकता है वो वापस आ जाए उसकी जिंदगी में. ये वाली जो इतनी लंबी सी लाइन इसने बोली है कि समवेयर समवेन, अगर उसको वो बंदा मिल गया तो उसको कितना बुरा लगेगा. पता नहीं, मतलब पता नहीं इन द सेंस वही उसको लग रहा होगा कि वापस ना आ जाए कहीं. हुँ, हम्म. राइट। बड़ी जल्दी बट इसने लव स्टोरी बना दी, मतलब कि पूरा कोई भी किसी भी लड़की का या ऐसी किसी भी टाइप की फीलिंग का कोई भी जिक्र नहीं था 176 पेजेस तक. एंड सडनली इन 4 पेजेस इतनी ज्यादा बर्निंग लव स्टोरी बना दिया इसने. हुँ, 170 पेज पे हम। हाँ, हम हैं अभी 182 पे हैं अभी हम. कितने पेज का है बुक? मतलब ऑलमोस्ट हाफ हाफ से ज्यादा ही हो गया. अच्छा, 400 पेज का ऑलमोस्ट. हुँ, ठीक है ठीक फिर है. और कुछ कंटिन्यू। वो हैं हाँ, मीनिंग्स. प्रिटर प्रिटरसेंशियस बोला ना तुम? प्रिटरसेंशियस बोला क्या? अच्छा हाँ, वो जो बहुत ही वियर्ड सा वर्ड था जो जिंदगी में मुझे. प्रिटर्स प्रीटर प्रीटरसेंशियस. प्रीटर, हाँ यस. सेंड आई हटा दो बस. नेचुरल क्यों आया? प्रीटर सेंशुअस जैसा कोई वर्ड ही नहीं है क्या? प्रीटर सेंशुअस. प्रिटर नेचुरल का मीनिंग
Let's try to fit in and see if it makes sense. मिल गया मुझे प्रीटर सेंशुअस. ओ क्या है? सेंशुअस डालो ना, SUOUS. ओ हाँ, इसीलिए हम ये रीडिंग सेशंस चाहिए इंग्लिश इंप्रूव करना. तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा? मेरा तो आ रहा है. तुम्हारा ब्राउजर ही बेकार है. ये देखो, मैं तुम्हें ब्रेव. उसमें चैट में देता हूँ. बोलो. एक मिनट. यस. वो सब्सक्रिप्शन मांग रहा था मीनिंग के लिए. मीनिंग तो बता दो यार. देयर इज वन मीनिंग. Twitter censored going beyond the senses. तुम्हें कैसे दिखा? मतलब कहीं नीचे नीचे कहीं दिख रहा है सर्च में, गूगल सर्च में. ट्विटर सेंसुअल, ये वाला लिंक देखो. ओ ये देखो, ये देखो. क्या है? Only evidence for pretercensus is from 1963 in the writing of Vladimir और Nabokov. यार, ये खुद के ही वर्ड बनाता रहता है. कभी नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो ये मैं नहीं छोड़ रहा हूँ ये वर्ड, तो इसने खुद ही बनाया तो. मीनिंग क्या कं- है? इसमें तो लिखा है, जो दूसरा लिंक मैंने भेजा है विकी वाला, उसमें लिखा है गोइंग बियॉन्ड द सेंसेस प्रीटर सेंसुअल. और इसने यूज किया है कि जब सेंसस. वो बंदी को देख रहा होता है तो फिर वो बोलता है कि इफ ड्यूरिंग दोज डेज ही हैड टू आंसर बिफोर सम प्रीटर सेंसुअस कोर्ट, ही वुड स्कार्सली हैव डिसाइडेड टू से दैट ही लव्ड हर. प्रीटर सेंसुअस कोर्ट क्या होता है? गोइंग गोइंग हाइपोथेटिकल कहना चाह रहा होगा या तो क्या कहना चाह रहा. कंटेम्पचुअस का तो ये मीनिंग होता है ना कि ऐसे कुछ बुरी, मतलब थोड़ा हेट्रेड से देखना. कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट इज हेट्रेड. ठीक है. मैनिफेस्टिंग और फीलिंग कंटेम्प्ट, स्कॉर्नफुल. मेंडेशियस का देखो, मेंडेशियस. MENDA. MENDACIOUS. हाँ, सेकंड वाला जो आ रहा है. Lying और untruthful. Untruthful. अच्छा, ओके ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. ये वो है जब वो फाइनली अपने रूम से बाहर निकल के उससे बात करने जाता है और बोलता है, सॉरी आई डिडंट नो यू वर हियर, सेड मेंडेशियस फ्योडोर. ओके, ठीक है. और ये एक लास्ट में देखना है, सिनेरस. SCINEREOUS. CI, not S, only CINEREOUS. नहीं, CINEREOUS. हाँ, यस. Resembling ashes of grey color. क्या है? ग्रे कलर. क्लोज टू हिज फेस देयर वाज हर सॉफ्ट सिनरस चीक. वही एशेस. वो इवनिंग वाला लाइट में इट लुक्स ग्रेइश, नो? लुक्स ग्रेइश. ठीक है, मेक सेंस. सही है. और तो नहीं मुझे देखना, मतलब और भी थे बट मैंने अंडरलाइन नहीं किए. इट्स फाइन. ठीक है, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. आई थिंक 3-4 बार पढ़ चुके, मतलब अभी तो हम बाय कर सकते हैं. ओके गाइस, चलते हैं. अंटिल नेक्स्ट टाइम. आ जाना फिर नेक्स्ट टाइम. ऐसे बोलते हैं वो टैग मार्क वाले भैया, कौन भैया? जिनसे हम जीन्स खरीदते हैं. ऐसे बोलते हैं, आ जाना फिर नेक्स्ट टाइम. और टाइम पे आ जाइए. टाइम इफ पे आ वी जाइए. अपलोड इट ऑन टाइम और लाइव स्ट्रीम इट ऑन टाइम, देख हम्म. लेते. इतना पंचल है हम. लेट्स. टाइम की बात हो रहा है एंड वी आर नॉट इवन सेइंग कौन से टाइम पे आएंगे हम. इतना पंचल है हम. किसी भी टाइम हम आ सकते हैं. यू हैव टू बी रेडी. Yeah, always on your toes.
Yes. Okay, bye. Okay, bye. Ending recording.